Okay, so if you're there in the session, you can unmute anytime and tell me your name, and we can have a discussion about what are your problems in IELTS speaking. Okay, so the next question is, are you looking forward to work, Bhavan? No, I am a student. Recently, I have completed my senior secondary. I do not. So you can say that I want to study more and then I look forward to work. Okay. Okay. So next, Jashan. Yes, Jashan, same question. Ma'am, I can't understand the question. Are you looking forward to work? कि आप काम करना चाहते हो अभी? Yes, Jashan. Like they're asking about कि आप कोई job करना चाहते हो या you want to work, anything. Yes, I am looking forward to a part-time job when I go abroad to study. Yes. ओके तो आप बोल सकते हो कि आई वांट टू, आप क्यों काम, जब आप कोई किसी चीज का आंसर देते हो ना, सो यू कैन ऑलवेज टेल व्हाई, कि मुझे वो क्यों करना है, उससे आपका आंसर इलैबोरेट हो जाएगा, राइट? यू कैन ऑलवेज गिव द आंसर टू व्हाई. Okay, so your last question for this round is, do you prefer to study in the mornings or afternoons, Bhavan? To be honestly, Honest, to be honest, honest नहीं honest होता है. to be honestly, mostly I prefer to study in morning because I easily concentrate on my study that time, and also the environment in morning time very peace, and they have no sound around me, so that's why I prefer to study in the morning. Okay, Jashan, same question. Well, I prefer to study in the morning because at that time I feel very fresh and I can concentrate on my study. Okay, so the next round is the cue card. So I request everybody of you to get a pen and a paper so that you can make your points. And I request all the students who are watching our video on YouTube, you can also get a pen and a paper, and you would get some time to make points. And those students who are new to IELTS preparation, let me tell you, your first round hai, that is your introductory round. Or introductory round mein they can ask you very general questions about you, about your work, about your study, yeah, very like common topics जो कि current affairs हैं, anything they can ask you, but they would be very simple. और वो आप relatively shorter बोल सकते हो, like you can speak for 2 lines or 2.5, 3 lines. And उसके बाद you should never answer in yes or no. अगर उन्होंने आपसे पूछा कि do you study, so it doesn't mean कि आप बोलोगे yes. So you have to elaborate, yes, I study and I am studying in senior secondary या कुछ भी. So you have to elaborate it. तो उसके बाद and we then come to cue card round, और उसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और एग्जाम में आपको वो 1 minute देंगे to make your points and 2 minutes for speaking, and then it will be the follow-up round. और अभी I'll share my screen. So this is, here we are practicing, so you can take more than 1 minute and then you can let me know when you are done. Okay, I'll just share my screen. So the question is, describe something that was broken in your home
एंड देन रिपेयर्ड, कि आपको कुछ डिस्क्राइब करना है आपके घर में अगर कुछ टूट गया और रिपेयर हुआ, तो उसमें आप क्या बोल सकते हो कि वो क्या था, वो कैसे टूटा और वो कैसे रिपेयर हुआ, आपको कैसा फील हुआ उसके बारे में. सो यू हैव टू मेक सम पॉइंट्स ताकि आप 2 मिनट के लिए बोल सको. ओके, सो यू लेट मी नो, जस्ट रेज योर हैंड और लेट मी नो व्हेन यू आर डन.
Ma'am, I have done. Okay, so let's begin. I'll start the stopwatch. Just give me a minute. Ma'am. Okay, you can start. We live in a modern and fashionable era. In our life, we used many things which looks very stylish and breakable, such as glass materials, showpieces, and so on. But here I would like to talk about such thing which was broken by me. It is none other than micro oven. Last month on my mother's birthday, we arranged a get together at home for our near and dear ones. I plan to bake a special cake for my mother, so that I worked on it. Firstly, I helped my mother with the cleaning and dusting. While doing cleaning, clinic, so that time my hand picked to micro oven. The micro oven fell down and the main plate of the oven, which is made of glass, broken fully. I feel very sad at that moment, because without the glass plate, it is not possible to do bake in this oven. On that time, my all planning which I made for my mother's happiness also damaged, and I feel very bad. My heart was uh, beating fast, and I do not understand what I do now. I tried another oven glass plate, but it makes my day bad to it make my day bad. While using another glass plate oven, electrical wire got short circuit. Everything was going wrong. When with strong heart, I told all things to my mother. She said to me, relax and calm. After that, we ordered a cake and celebrate my mother's birthday. Next day, I went to an electrical shops to repair my oven. Fortunately, it was totally broken, the and the owner's electricians say that it is very damaged and have not chance to repair it. When the end, I learned fortunately, it was a very worried situation. I tell a store manager replace my owner with the new one, but he charges some amount of a glass plate. And lastly, the manager asked me that the when this glass is put to new ones, this to put new ones, so that time the owner is good as a his shape. On the end, I learned a lesson. Electronical things need extra care and safety also. So that was a thing I was broken and then repair it. ओके, तो भवन, आपको क्या लगता है आपने कितने टाइम के लिए बोला? मैम 2 मिनट से ऊपर.
You spoke for 4 minutes. Hmm. I did not interrupt you क्योंकि आप एक तरह की प्रैक्टिस ही कर रहे हो, तो जितना आप बोलोगे उतना आप कंफर्टेबल होगे, सो मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया बीच में. सो भवन, देखो, हर किसी की अपनी बोलने की स्पीड होती है. अगर मैं यही बात मैं बोलती तो मैं शायद 3 मिनट में खत्म करती, बिकॉज आई स्पीक अ बिट फास्ट. तो आपका पेस बहुत स्लो है बोलने का, तो आपका जो कंटेंट है वो 2 मिनट में वो कम आएगा, क्योंकि यू स्पीक इन अ लाइक स्लो पेस. तो हर किसी की अपनी स्पीड होती है बोलने की. तो आपका जो 2 मिनट में कंटेंट आएगा दैट वुड बी वेरी लेस. तो आपका कंटेंट ज्यादा था और आपकी स्पीड स्लो थी, पर टाइम वही है, टाइम इज 2 मिनट्स. तो आपको कंटेंट उस हिसाब से ही मैनेज करना है. अगर आपको पता है कि आप स्लो बोलते हो, तो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आप कम कर दो, वो आप बस 10 सेकेंड कर दो, क्योंकि यू नो कि आप इतना, फिर आपका टाइम ओवर हो जाएगा. यू विल स्पीक फॉर 3 or 4 minutes. सो यू गिव द इंट्रोडक्शन फॉर 10 seconds और फिर आप मेन बात पे आ जाओ कि क्या टूटा, कैसे टूटा, फिर मैंने रिपेयर करवाया, या मैंने कैसे मुझे कैसा लगा. सो ये सारे पॉइंट्स आप इंक्लूड करोगे तो आप आराम से 2 मिनट्स बोल सकते हो. राइट. तो एवरी स्टूडेंट हैज टू स्पीक अकॉर्डिंग टू देयर पेस. कि आपकी बोलने की पेस क्या है, उस हिसाब से आप बात करो, उस हिसाब से प्रैक्टिस करो. एंड देन अल्टीमेटली यू विल कम टू नो कि आपके कितने कंटेंट में 2 मिनट्स ओवर हो जाते हैं. सो भवन, इफ आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट यू, तो जो आपका कंटेंट है वो कम आएगा 2 मिनट्स में, बिकॉज यू स्पीक एट अ स्लो पेस. एंड इफ आई टॉक अबाउट मी, तो मेरा जो कंटेंट है इट वुड बी लिटिल बिट मोर, बिकॉज आई स्पीक लाइक लिटिल फास्ट देन यू. सो स्पीक अकॉर्डिंगली. तो आपको पता होना चाहिए दैट हाउ मच यू हैव टू स्पीक, क्योंकि दे विल इंटरप्ट यू इन बिटवीन. आई अग्री कि वो आपको 2 मिनट के बाद इंटरप्ट कर देंगे, बट अगर आप बीच में ही हो, अभी आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि प्लेट टूट गई, या अभी आप इस बात पे पहुंचे ही नहीं कि प्लेट कैसे टूटी या कुछ भी, तो वो आपका जो आंसर है दैट वुड नॉट बी कंप्लीट. उन्होंने पूछा वो कैसे टूटा और कैसे रिपेयर हुआ. आपको सारे पॉइंट्स डालने हैं अपने स्पीकिंग में. और जो आपने बोला कि रिपेयर कैसा हुआ, वो आपने 3 मिनट के बाद बोलना शुरू किया कि हाउ डिड इट गेट रिपेयर. तो वो तो आपको 2 मिनट के बाद रोक ही देंगे, मतलब आपके सारे क्वेश्चन आंसर नहीं हुए, एंड दैट इज टास्क इन कंप्लीशन. तो यू हैव टू टेक केयर कि आपको उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके हर पार्ट को यू हैव टू आंसर. एंड इफ यू आर नॉट आंसरिंग, दैट इज टास्क इन कंप्लीशन, एंड दैट इज अ बिग ब्लंडर. Okay, Bhavan. So let's do the follow-up questions. हेलो गुड इवनिंग मैम. Hi, good evening. How are you? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ. Can you please tell me your name? ਹਾਂਜੀ, Can you please tell me your name? ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਡਮ. Okay, okay. So can we do ਹਾਂਜੀ round one questions? क्योंकि mock तो almost complete हो गया था, तो let's start from the beginning. Round one कर लेते हैं. We still have some time. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ चलो. ਹਾਂਜੀ मैडम, मैं थोड़ा लेट हो गया ਸੀਗਾ. मैं थोड़ा किਹਾ नहीं, हो बहुत गए, ज्यादा हो गए हो आप. लेट सेशन बहुत से लेट ज्यादा हो हो गए. गए. Okay. हाँ Okay. So your first question is, what subjects are you studying? हाँ जी, यस मैम. What subjects are you studying? Well, I completed my industrial training institute in machinist trade, and I chose several subject in that study, like workshop environment and practical drawing, and so that various kind of subject which I like to choose Okay. that time. Next question. Why did you choose to study those subjects? Because my father recommended me to choose IT field, because I can make my career in this field as I plan go to abroad for my next education. Those subjects can be beneficial over there.
Okay. So do you like your subject and why not? Yes, I extremely like because it is very important for me and I can learn several kind of things in this field. Okay. So is it very interesting? Okay, I think he has some internet issues. Okay. So I want to tell you some of the evaluation criterias and on what basis the interviewers evaluate you. Okay, so you're back, Arshdeep. Your voice is breaking. ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਥੋੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ Okay, कोई बात ਤਾਂ नहीं. ਕਰਕੇ So the question ਬਾਹਰ is ਹੁੰਦਾ it okay? So आपका question है, is it very interesting? Yes, it is extremely interesting for me because I can never bored when I read various kind of subject in this field. Okay. So the next question is, are you looking forward to work? Yes, I ਪੰਜਾਬੀ Okay, so in the time he joins back, I was telling you about some of the evaluation criteria that the interviewer evaluates you. So the first would be your vocabulary. So your vocabulary should be good. Like it's not like you have to use good vocabulary in every sentence, but you can include at least 3 or 4 good words in your speaking also, in your writing also. And that would be really helpful to get you good bands. Okay, Arshdeep, are you there? ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ Okay, so आपका question था, are you looking forward to work? ਲੋਕੀ ਵੇਖਣਾ ਮਤਲਬ मतलब इसका मतलब है कि आप आगे काम करना चाहते हो. Yes, I want to do work in a reputed company so I can get good income money to get to enjoy my life. So I earn more. Okay, so the last question for this round is, do you prefer to study in the mornings or in afternoons? I like to do study in the morning time because I am free on that time and I can concentrate better in the morning time, which is not possible, especially afternoon or evening time. Okay, तो मैं आपको एक क्यू कार्ड शेयर करती हूँ. I'll share the screen. You take some time and make points. Okay, so the first point I was telling you was about vocabulary, कि आप 3 या 4 अच्छे words use कर सकते हो, and then your grammar. Grammar is very important because grammar is the basic of every language. तो आपकी grammar बिल्कुल ठीक होनी चाहिए. It should be appropriate. Okay, so Arshdeep, this is your cue card. Describe an ambition that you have not achieved. कि आपको कोई भी अपना ambition बताना है या dream बताना है जो आपने अभी तक achieve नहीं किया. इसमें आप क्या include करोगे कि वो क्या है, कि वो आपने अभी तक क्यों नहीं अचीव किया और आपने क्या किया उसको अचीव करने के लिए और आपको कैसा लगा. How did you feel? ठीक है मैडम माड़ी मोटा मेरा ठीक है मतलब हाँ, अच्छा बोला आपने. You spoke well. थोड़ी सी ग्रामर में मिस्टेक्स हैं तो वो लिख के ठीक हो जाएंगे, बट अदरवाइज यू स्पोक वेल. हाय सिमरन, गुड इवनिंग. मैंने एम्बिशन वाला वैसे मैं कीता वा. ओके, चलो कोई बात नहीं, सुनते हैं दोबारा आपसे फिर. हाय सिमरन, गुड इवनिंग. ठीक है. Hi, good evening, Ekta. Okay, how are you? I'm good. How about you? I'm also good, thank you. So just tell me something about yourself.
Well, Ekta, my full name is Prabsimran Kaur, and I am a working professional as a business analyst in renowned Okay. IT company, Bajaj Finserv. Okay. So have you appeared for IELTS, or you are preparing and you have to give for the first time? Tomorrow is my IELTS speaking exam. Okay. So what I can suggest you at this time is you can watch all the YouTube videos, and that would help you, because now you don't have much time left. And what I would suggest you is don't take stress at this time, because I this just time, want to give you one speaking if possible. yeah, sure, we are doing the cue card. So I'm just sharing the Please go ahead. screen. Yeah. Let me 12 just तरीक में पेपर मैडम है हाँ जी अर्श. let me just take my pen 12 and तरीक paper. में पेपर ओके अर्श, हो गया आपका? हो गया चलो मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट करती हूँ. ओके, तो यू स्टार्ट स्पीकिंग अर्श. It is very important to set the goal in their life, and ambition help the people to get success in their life. And I think without getting the goal, a person is incomplete their life. And I have achieved a short goal in my life. Here I like to talk about the action which I want to give. I want to go to Canada for my further education. During my senior secondary education, I made a plan to do higher study in Canada. College, a person has to show their English language pronunciation test like IELTS. That's why I am taking this exam, and moreover, it is a really important requirement to get enrollment in a Canadian college. And after that, a person should good marks in last study. And I completed my industrial training institute with a good grade. And also I have been working on my exam from 2 months, and I also study through several books like Cambridge, and I study day and night and watch some IELTS related video with the help of and now I am little bit perfect in English, and I can communicate better with English module, and so that ambition which I want to achieve anyhow. ठीक है मैडम? अर्श, मेरी स्टॉप वॉच में इट्स 2 minutes, पर बीच में आपने लीव भी किया था तो 10 सेकंड उसका एक्स्ट्रा लगा लो, तो आपने 2 मिनट से कम बोला है. यू स्पोक फॉर 1 minute 45 seconds अप्रोक्सीमेटली. आपने कम बोला 2 मिनट से. सितंबर के अच्छा कितने मैडम मेगा था 10-15 सेकंड आपने कम बोला है, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट था, पर फिर भी टेक अच्छा केयर. थोड़ा सा ध्यान रखो कि आप टाइम के नीचे मत बोलो. He's facing some internet issues. Okay, Simran. So shall we start? मैं फिर सुनाऊं मैडम? Just give me a minute, Simran. नहीं अर्श, so I was telling you कि आपके 10-15 सेकंड नीचे थे, तो बस इसका ध्यान रखना. बाकी आपने ठीक बोला, बस वही ग्रामर में इशू है थोड़ा सा. ठीक है. तो अपना क्यू कार्ड लिख के देखो, एक बार लिख के अपनी गलतियां निकालो खुद से, फिर शायद थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो इससे भी. ठीक है. ठीक है अर्श. सो विल लेट यू हाँ नो जी, कि हाँ जी. नेक्स्ट सेशन कब है, सो यू कैन ज्वाइन. ओके सिमरन, लेट्स स्टार्ट. Just give me 30 seconds. It would be 7-1, so I can also basically calculate it, what I'm speaking and what I'm not. I'll be Basically, having the stopwatch. Just don't worry about that, because at that time आपके पास तो वॉच हो गई नहीं, तो मेरे पास स्टॉप वॉच है.
All right. Okay. So basically, मैंने speaking की कोई practice नहीं किया. It would be my first practice and the last practice before exam. Okay, so let's see. Yeah. I hope it would be good and it should be good. कल आपका एग्जाम है, you don't have any other option now. अच्छा ही होना चाहिए. Yeah, अच्छा Okay, हो ही let's जाएगा. begin. I have Okay, this no much problem. confidence. Let's begin. So everyone has some ambitions in life, and I also have one, that is opening a bakery, because I am a home chef, a home baker. But I was not able to fulfill my dream till now because of some financial issues and the family responsibilities that I have on my shoulders. So I had to choose an option, a career which has some assured job and security. So I chose the IT sector, as I have done my bachelor's in IT sector, and now currently I'm earning very good as a business analyst in Bajaj Finserv. So this I would say that it was a good choice of career, as I have grown from last 3 years a lot, and I have a good salary package right now. So now I can plan my future and plan how to make my ambition. So I have basically started collecting money and investing in few things so that I can have money for opening my bakery in future. So all in all, I feel that I would be able to basically fulfill my dream, long held dream, in future and coming, I would say 2 to 3 years. You spoke for just 1 minute, Simran. Oh. So you have to like, it is the basic criteria. You have to speak for 2 minutes, at least 2 minutes. And if they interrupt you in between, like that's their wish. But आपको तो 2 minute बोलना ही है, and you just spoke half of it. And like what you can do is, बाकी सब कुछ is okay. So what you can do is, अभी आपके पास आपका टाइम है, सुबह का टाइम है, just focus on your timing. You need to know कि कितना content आप बोल सकते हो in 2 minutes, because everybody has a different pace of speaking. सबका अपना pace है, कोई fast बोलता है, कोई slow बोलता है. Your मेरा pace is pace कैसा लगा normal. आपको? It's normal. It's good. It's normal. ना ज़्यादा fast है, ना ज़्यादा slow है. Like it's understandable. तो अब आपको बस ये देखना है कि आप 2 मिनट में कितना कंटेंट डाल सकते हो, एंड यू शुड नो दैट हाउ मच इज 2 मिनट्स. एंड अगर आप 2 मिनट्स के नीचे बोलोगे, दैट इज अ बिग ब्लंडर. And if you are speaking over 2 minutes, they will interrupt you in between. And one more thing that is very important. अब इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स थे. Like not in this question, the previous question I asked, that the question was, describe something that was broken in your house and you repaired it. There are 2 parts, कि जो टूटा और repair किया आपने, कैसे repair किया. So you have to answer both the questions, and that too under 2 minutes. अगर over 2 चला गया किसी का भी आंसर, they will stop और एक क्वेश्चन का आंसर रह जाएगा, and that would be task incompletion. The main criteria in IELTS speaking or writing is you have to complete the task. What is completing the task? Answering all the questions, answering all the parts of a question. I can wear the watch, right? No, you cannot. So अगर आप डाल के भी जाओगे, they will take it from you. You're not allowed to see the time. And it's not about time also. ऐसा कुछ restriction नहीं है कि आपको 2 मिनट बाकी के लिए. मेरी speaking में आपको कैसा लगा? Speaking is good. So tell me something that do you speak English on a daily basis, or do you speak like your regional language? So you speak No, on I a daily speak on daily basis. basis. See, the last minute tips that I would give you is कि you just have to communicate. Don't take it as an interview. Don't take it as an exam. You just have to communicate. बस just make it a mindset कि जैसे मैं बात करती हूँ, just I communicate. I just have to communicate. वो मुझसे बात करेंगे, मुझे you have to show your expressions. If you feel sad about something, but nowadays mask लगा के जाना होता है ना? Yeah, but your voice modulation shows कि आप कितने excited हो या sad हो, and I don't think कि अब mask mandatory होंगे, but obviously you have to wear it. और वो काफी distance रखते हैं वैसे भी teacher और interview और student में. And always take care कि अब आपने ऐसे बोला कि मुझे अपनी बेकरी ओपन करनी है, so that is very exciting. So sound like that.
सो अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन पे थोड़ा सा ध्यान दो. ऐसे नहीं है कि यू आर स्पीकिंग इन अ मोनोटोनस टोन, बस आप बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो. दीज थिंग्स मैटर, जो बेसिक थिंग्स है. सो दैट इज वेरी गुड अबाउट यू कि ग्रामर में कोई मिस्टेक नहीं है, पेस इज गुड. सो थोड़ा बहुत वोकैबुलरी उस टाइम जो दिमाग में आए, एक दो वर्ड जस्ट स्पीक दोज क्यू कार्ड में, क्योंकि वो आपको 1 मिनट का टाइम देंगे. तो एक दो वर्ड सोच लेना वोकैब के कि मैं क्या डाल सकती हूँ उस टाइम पे, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन यू गेट सम टाइम टू थिंक. बाकी तो चलता रहेगा. सो एक दो अच्छे वोकैब के वर्ड्स. एंड देन टास्क कंप्लीशन, वेरी इंपॉर्टेंट. योर टाइम कि 2 मिनट बोलना है. एंड देन योर एक्सप्रेशंस, डोंट स्पीक इन अ मोनोटोनस टोन. जैसे हम हिंदी या My tone was पंजाबी में, monotonous. या सो जैसे हिंदी पंजाबी में एक्सप्रेस करते हैं कि मैं बहुत खुश थी, सो आई फील सैड. सो मतलब इन इंग्लिश ऑल्सो योर एक्सप्रेशंस शुड Yeah, I रिफ्लेक्ट understand. in your voice and on your face also. Can I give it again? Can I give it a try? Yeah, you can give some other topic if you want. Yeah, please. Okay. So you मैम should अपनी have. क्लास कितने लोगी हुन? वो अभी मुझे भी नहीं पता. I will let you know. अच्छा ठीक है. So how often you conduct these sessions? Like in the month of January, the sessions used to be conducted daily, but abhi February में we have reduced the frequency. जनवरी तक डेली हुए थे. नवंबर दिसंबर जनवरी 3 months डेली सेशंस हुए हैं. हाँ आप जी थोड़ा हाँ सा जी जल्दी मैडम. आते, मैं आपको हेल्प करती. और अभी लास्ट मिनट में मुझे भी नहीं नहीं वो तो समझ आ रहा व्हाट शुड आई टेल यू. वो तो मैडम मेरा मैंने ध्यान ही ध्यान नहीं नहीं है. दिया. I just saw your status and right now and I just realized कि हाँ इसमें कुछ speaking के regarding है. मुझे देख लेना चाहिए क्या होगा कल एग्जाम में. Okay, so this is your topic. Describe a time when you organized a happy event successfully. So this would be really easy for you, Simran, I think. क्योंकि आप एक बेकर हो तो शायद आपने इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए होंगे. तो दिस इज योर काइंड ऑफ क्वेश्चन. पेपर कदों 12 तरीक दा मैडम ਜਿਹੜੀ ਆ? जी. सिमर. अच्छा. और आपने बुक कर लिया पेपर अपना? मेरा ही मैडम एक्चुअली 12 तरीक ਦਾ ਹੀ है. अच्छा, कल है आपका भी पेपर? ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ. ਕੱਲ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪਰਸੋਂ ਆ ਮੇਰਾ 12 12. ਤਰੀਕ ਨੂੰ. अच्छा, आज 10th. 13 ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਮੈਡਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆ. 13 ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ओके, ਆ. 13. ਹਾਂਜੀ ठीक 9 है. ਵਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪੇपर. Okay. ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ. चलो अच्छा हो जाएगा होपफुली. हाँ बाकी जी आप हाँ जी प्रैक्टिस करते रहो. हाँ फ्लुएंसी जी तो आपकी प्रैक्टिस ही है. अच्छी हाँ है. जी हाँ अपनी जी. ग्रामर पे ध्यान दो वर्षा. बाकी आपका ठीक है. जस्ट फोकस ऑन नहीं ग्रामर. मैडम ग्रामर तो मैडम मतलब कितने बैंड कटे जाते जी. मैडम मोटा कुछ इधर उधर हो गया वर्ब हो माड़ा गया. मोटा नहीं हो रहा ना, बहुत ज्यादा हो रहा है. माड़ा मोटा अच्छा होता जी था कोई फर्क नहीं सीगा. ठीक मतलब है जी. मतलब हर लाइन में एक एक गलती हो ही रही है ग्रामर की, तो वो हाँ बहुत जी ज्यादा इम्पैक्ट डालता है. हाँ जी ठीक है जी. चलो कोई ना एंड मैडम. सिमरन, you know that they will give you 1 minute to write your points, हाँ, right? I think 1 minute हो गया ना? हो गया होगा. Did not see. वैसे you know कि वो आपको 1 मिनट देते हैं. हाँ, that I know. ओके. मैंने तो पहले प्रेयर किया हुआ है. ओके ओके. अर्श, आप भी पॉइंट्स बना सकते हो. यू कैन प्रैक्टिस. हाँ जी मैडम. 7 ਵਜੇ मैडम खत्म नहीं सी क्लास वाली ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ? कोई बात नहीं, इनका कल एग्जाम है. अच्छा अच्छा ठीक है जी. हम्म. कल नहीं मैडम 12 तरीक ਨੂੰ ਹੋਈ. Speaking कल है ना? अच्छा ठीक है जी. ओके. ओके सिमरन, लेट्स स्टार्ट. Just a minute. They will give you 1 minute only. नहीं, वो थोड़ा सा disturbance है. Okay, That's why no I'm problem. avoiding them. Yeah, let's start. Okay. So basically, I have been organizing the events since my college life, as I was the head of the event management committee. So today I would like to talk about an event which I organized in the renowned club in Ludhiana, that is Satluj Club. It was basically a bake sale. Being a home chef and home baker, I usually take part in such events because I just love baking and I try to improve my skills and enhance them and publish and display to the people so that I can attract more customer attention. So
in this event, what we did was that I basically connected with a few bakers in my city, and we made a group, and and with that group, we basically conducted a complete bake sale into the club. And for the decor, I outsourced and the preparations for the decorations to one of the renowned decor company, that is Orista. They helped us with all the tents and the decors and the flowers. The tables were organized in such a way that it was accessible for each and every baker to represent their things. They also helped to provide us the fridge, so that the refrigerators, basically, so that the bakers can store their products and they won't get basically harmed from any of the chemicals that are present in the atmosphere. And the eatables were, they also offered the customers with some other things rather than the bakery products. Like we had some the stalls by Lay's and Coca-Cola, so that they can get more options into the sale and they don't get bored with the sweet items only. So my family and friends helped me to organize whole event, as my mother helped me in preparing the food, and my sister helped me into buying the whole raw materials, and my friends helped me to move all the stuff to the bakery, to the sale, and help me organize everything. So all in all, what I feel about this event was very successful, as we were able to basically entertain the customers, and we were able to basically attract so much customers with the promotions and everything, as my friends helped me with the promotions a lot. And the other bakers too had their own clientele, which came into this bake sale, and we had a very good sale in this bakery, in this bake sale, and it was a huge success. Spoke for 2 minutes 30 seconds first of all, and जब आपको 2 मिनट हो गए थे तो उसमें you included all the points. You described everything about the event. That was a good thing, and even if they would have interrupted you, तो आपका जो task complete हो चुका था. Basically, what I want to explain each one of you, कि time चाहे extra चला जाए, पर आपका 2 मिनट में आपके सारे आंसर्स आ जाने चाहिए, whatever they have मेरे asked you. बोलने में जो थोड़ा सा मैं अड़ रही थी, वो ज्यादा इफेक्ट करेगा? See, it depends. अगर आप कुछ कोई भी इंसिडेंट हुआ या इवेंट हुआ है, so obviously आप सोच के ही बोलोगे, because you cannot recall everything at one time. पर वो पता लग जाता है कि आपको इंग्लिश का वर्ड नहीं आ रहा, ये आप कोई बात सोच रहे हो, वो everybody can figure out. So अब आपको उसमें डिफरेंस देखना है कि आपको बात नहीं याद आ रही, क्या आपको इंग्लिश का वर्ड नहीं याद आ रहा. एंड नेवर स्टॉप, मतलब रुक, ऐसे नहीं कि आप रुक ही गए बीच में. जो वर्ड्स है सिंपलेस्ट ऑफ वर्ड्स याद आ जाए वो बोल दो. फिर मैं रुकी ना भी बीच में, या सो वैसा एक बार आप बिल्कुल ही रुक गए थे, तो वैसा बिल्कुल नहीं करना. डू नॉट स्टॉप. फिर चाहे बात बदल दो, चाहे कोई भी सिंपल सा वर्ड बोल दो, बट नेवर स्टॉप. दिस इज ऑल्सो वेरी बिग ब्लंडर. अगर आप कोई बात याद कर रहे हो तो एवरीबॉडी कैन फिगर दैट आउट कि आप कितने बैंड्स डिजर्व करती हूँ अभी फॉर नाउ विद नो प्रैक्टिस. इट्स 7 बैंड, क्योंकि 7 बैंड इज बेसिक. अगर हम उनके क्राइटेरिया 7 आ जाएंगे इतनी इजीली. 7, यस, बिकॉज आपने ग्रामेटिकल एरर्स नहीं की. यू डिड नॉट हैव ग्रामेटिकल एरर्स, और अगर की तो आपने ठीक कर दी बीच में. और ऐसा मत करना कि आप मतलब एक आध बार ठीक करते हैं, वो हम हिंदी में भी कर देते हैं कई बार. दैट इज फाइन, but don't do it every time or after every sentence. And also you spoke fridges. We speak refrigerator, वो भी आपने ठीक किया. So these things keep in mind, and also don't stress. बिल्कुल stay calm. जिनका भी एग्जाम है, अर्श आपका भी है, किसी का भी एग्जाम है, कल या परसों, बस अब आप काम रहो. जिस बात पे आपको फोकस करना है, अर्श आप ग्रामर पे फोकस करो. सिमरन आप सिर्फ अपने किस पे फोकस करोगे आप? ओवरऑल हर चीज. वोकैब अब मैं लास्ट मिनट आपको ये नहीं बोल सकती कि आप वोकैब लर्न करो. आप क्या लर्न कर लोगे? सो आई वुड से कि ओवरऑल आप प्रैक्टिस करो. बस जस्ट स्पीक इंग्लिश, मतलब एक फ्लो लाओ अपने लैंग्वेज में, क्योंकि हम घर पे पंजाबी बोलते हैं तो एकदम से इंग्लिश स्विच करना इज डिफिकल्ट समटाइम्स. यार मुझे ना जॉब मैंने रिसेंटली छोड़ी है. मैं रिसेंटली बजाज ज्वाइन की है, तो इससे पहले लाइक दिसंबर के महीने तक
Rose, every day I was used to talk to my foreign clients, Australian and American also. तो एक फ्लो बना हुआ था उसका. Yes. तो 1.5 महीने से कोई बात नहीं करी है ना इंग्लिश में, तो सारा फ्लो टूट गया. So that is the main problem because we are not used to speak. अब I was learning French but I couldn't क्योंकि मैं अब यहाँ पे किससे बात करूँ फ्रेंच में. So that is the main problem. तो रोज इंग्लिश जब हम बात करते थे तब Yes. फ्लो भी अच्छा था, तब बात भी सही होती थी. So बट अब 1.5 अभी महीने से कोई अब आपका कांटेक्ट कल नहीं. एग्जाम है तो आप ट्राई करो, कॉल योर फ्रेंड्स जो बाहर रह रहे हैं, तो बस एक फ्लो बनाओ कि आपके मुंह से ऑटोमेटिकली स्मूथली इंग्लिश निकले. अभी के लिए आप ये कर सकते हो. आई वॉन्ट स्ट्रेस यू विथ, मैंने आपको जो पॉइंटर्स बताए बस वो ध्यान रखना. मोनोटोनस टोन में नहीं बोलना. एक आधा वर्ड वोकैब का लिख लेना क्यू कार्ड के टाइम, जब आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं ताकि उस टाइम बोल दो. और उसके बाद टाइम का ध्यान रखना. हर पार्ट आंसर करना है क्वेश्चन का. ये प्रायोरिटीज हैं आपकी. सो अंडर टाइम नहीं बोलना. दीज आर द प्रायोरिटीज जो आपको, अर्श आपको भी, सिमरन आपको भी, जिनका भी एग्जाम है आजकल में, तो बस इन बातों का ध्यान रखो. बाकी अब वी डोंट हैव मच टाइम कि अब आप डिटेलिंग में जाओ. ठीक है. आई वाज सो कॉन्फिडेंट इतनी कि मैंने तैयारी ही नहीं की बिल्कुल भी, कि रोज बात तो करते ही थे. एक बट सी स्पेस तो IELTS बनाए इज हुए हैं. डिफरेंट. IELTS इज डिफरेंट. IELTS इज डिफरेंट बिकॉज वो क्लाइंट को एक चीज समझाना है, उसके साथ कन्वर्स करना. हम स्टॉप ले सकते हैं, हम सोच सकते हैं, सोच के बोल सकते हैं, एंड वो यहाँ पे नहीं मुझे मिलेगा. सी हर कोई इवैल्यूएट करता है, चाहे वो कोई हमारा फ्रेंड है, बट दैट डजंट मैटर. वो करते रहें, बट यहाँ पे मैटर कर रहे हो कि बैंड्स जाएंगे. सो डोंट वरी सिमरन, यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम. कोई भी प्रॉब्लम हो सुबह भी तो आई विल हेल्प यू आउट. कहीं भी कुछ पूछना मेरे हो. 6 साढ़े 6 आराम से आ जाएंगे ना. आई थिंक यू शुड गेट 7. बाकी बस अंडर टाइम मत बोलना, उसमें मार्क्स कट जाते हैं. टाइम का ध्यान रखना. आपके भी आ जाएंगे. अर्श, अगर आप ग्रामर पे ध्यान दोगे आपके 7 से ज्यादा आ जाएंगे. अगर आप ग्रामर पे ध्यान दोगे ना आपके 7 से ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि आप अच्छा बोलते हो. 7 तो आएंगे ही, बस ग्रामर पे ध्यान दो. हाँ जी ठीक है मैडम. ठीक है चलो. हाँ जी. तो अर्श, अगर कल या सेशन हुआ आपको बता देंगे, आप ज्वाइन कर लेंगे. आपका एग्जाम मंडे को है, अभी संडे को, सॉरी संडे को. एतवार ਨੂੰ हाँ जी 9 बजे चलो होंगे मेरे फिर अगर हुआ कल या परसों तो विल लेट यू नो, यू कैन ज्वाइन. हाँ जी हाँ जी. ओके, ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू. ऑल द वेरी बेस्ट. आई रियली होप कि आपका एग्जाम अच्छा हो, एंड जस्ट लेट मी नो कैसा हुआ. हाँ जी. ओके देन. सो गुड इवनिंग एवरीवन. विल मीट नेक्स्ट टाइम. ओके बाय एवरीबॉडी. थैंक यू. ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. बाय. ओके मैम.